हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अब वी डोंट वांट ये जो भी चल रहा है, आई डोंट वांट टू टेक द नेम। सबको पता है कि इस वक्त वर्ल्ड में क्या चल रहा है। वी डोंट वांट टू बी नेगेटिव, वी वांट टू बी पॉजिटिव, वी वांट टू बी चेयरफुल, ताकि पॉजिटिव एनर्जी जाए। And on that note, today I'm going to share one little trick which I have, जिससे आपका काजल स्मज नहीं होगा। आई नो बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होता है जिनकी ऑयली लिड्स होती हैं, या ऑयली लिड्स ना भी हो, कई बार काजल इतना इफेक्टिव नहीं होता है कि वो ब्लीड ना हो। एंड इफ़ यू वांट टू नो दैट ट्रिक, इट्स अ वेरी 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 easy trick. So this will be a very small video. If you want to know the trick, just please wait and watch the video. If you're new to my channel, I'm Swapnil. Please subscribe, hit the like button, comment your thoughts, and let's get started. So for that you will only need, I've already applied my kajal, so you only need a black color eyeshadow, or if you don't have black color eyeshadow, use any dark brown eyeshadow, that would also work. But today I am going to use a black color eyeshadow. I have this Huda Beauty Rose Desert palette, from which I'm going to use the black shadow. You kind of need this flat brush. Let me show you. It's like a flat brush, and after you have applied kajal, actually you need to do this process fast. I just applied my kajal and I'm starting this video. Take a little black, and what you need to do, you just have to go over your kajal to your whole eye. What this does, ये आपके काजल को एक प्रोटेक्शन लेयर जैसे दे देगा, क्योंकि ये ब्लैक कलर का आई शेडो है, इट्स इन पाउडर फॉर्म। और इससे क्या होगा कि आपका जो काजल है, इट विल नॉट ब्लीड। Trust me, I have tried this trick so many times and it really does work. You can let me know if it worked for you or not. You can let me know your comments in the comment section below, and wait for my next video. Till then, bye.